Students, see question. A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. If the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. स्टूडेंट, एक वुडन आर्टिकल था जिसके दोनों साइड पर एक हेमिस्फीयर निकाल लिया गया दोनों एंड से, और हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है स्टूडेंट? 3.5 सेंटीमीटर. So you can see this hemisphere 3.5 centimeter of radius. Now students, see the cylinder. Its height is 10 centimeter and its radius is also 3.5 centimeter. So since radius of hemisphere, outlet and cylinder is same, that is r is equal to 3.5 centimeter and height of cylinder h is equal to 10 centimeter. So student, ये total area कितना आएगा surface area? एक तो curved surface area of cylinder plus curved surface area of the both hemisphere at the both ended, that is 2 into curved surface area of hemisphere. दोनों आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, सेम होंगे curved surface area of hemisphere दोनों एंड की, क्योंकि उनका रेडियस इक्वल है. Now see, surface area of the remaining part will be is curved surface area of cylinder plus 2 into curved surface area of hemisphere, that is 2 pi rh प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ अब r और h की वैल्यू रखिए, और उससे पहले स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन ले लें तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन. तो आप 2 पाई आर कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में आपको h प्लस 2r मिलेगा. फर्स्ट टर्म से h बचेगा एंड सेकेंड टर्म से जब 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो 2r बचेगा. नाउ अब वैल्यू रखिए स्टूडेंट. नाउ 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 ब्रैकेट 10 प्लस 2 इंटू 3.5. Now 7 से 3.5 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, that will give 0.5. Now 2 into 20 is 44 into 0.5 and ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट 2 into 3.5 is 7 and 10 plus 7 is 17. So 44 into 0.5 will give 22 into 70, that will equal to 374 centimeter square. This is your required area of the article.